Good morning, students. Am I audible to all? Kindly put it in the chat. Am I audible, students? Kindly put it in the chat. Okay. Just give me few minutes and then we'll start.
Okay, shall we start now? Everyone, kindly put in the chat window. Okay, you want it from winter 18. Okay, fine. We'll start from winter 18 then. Just give me 2 minutes. Okay, fine. या श्योर सेशन इसीलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे और ये सेशन कल भी कंटिन्यू होने वाला है, राइट? सो कल इवनिंग में भी आपका एक कंटिन्यूएशन होने वाला है. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपको कल भी ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल दोज थिंग्स यू विल बी गेटिंग. ओके, so as a result I'll start with the solution of the papers and how to solve. I'll request every one of you to please keep a notebook with you. Okay, please keep a notebook with you. The only reason behind it is in case we have some important things to be solved, I want you people also to solve it. मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी वो solve करें so that आपका अगर कुछ doubts है तो that gets cleared here itself. Okay, now let's start. So first question, define the term algorithm. Now exactly the marks given to each of this question over here is 2 marks. Okay, it's a complete 10 marks question. So I hope the screen is completely visible to all. Screen is visible to all. Yes, no, kindly put in the chat. Okay, fine. So the first question is define the term algorithm. Now, what is exactly an algorithm? So algorithm, you know that whenever you write any program, right? So before writing the program, हमेशा program लिखने से पहले it is always suggested that you are going to write down a specific algorithm for the same. Yes, I will be giving you the important questions. Kindly listen to what is going on for the session first. At the end, you will be getting important questions. Don't worry. This is a 2 days session. So accordingly, I'll be planning the things. Right. So algorithm is specifically when you, before writing a program, if you write an algorithm, it gives you a gist of what all things we need to write in a program. Rather, how my program is going to be efficient, मेरे क्या क्या parameters होने वाले हैं program में, all these things whenever we want to mention, we are going to mention something known as an algorithm, right? So an algorithm is a stepwise set of instructions written to perform a specific task. Now यहाँ पे model answers में आपको एक ही statement दिया गया है, but actually if you go to check, यहाँ पे आप इससे ज्यादा भी लिख सकते हो. जैसे for example, what is the use of an algorithm? Algorithm कहाँ use हो सकता है? The thing is कि whenever आप जब भी एक प्रोग्राम लिखने का कोशिश करते हो, अगर उसके पहले एक एल्गोरिदम लिखोगे तो the thing is, see, you know there are different programming languages, right? Java है, C है, C++ है, many programming languages. एल्गोरिदम सबका सेम होता है. एंड दैट्स वाई आपका जो सब्जेक्ट है, आपका सब्जेक्ट कॉन्सेंट्रेट करता है डिफरेंट सर्चिंग, डिफरेंट सॉर्टिंग टेक्निक्स के एल्गोरिदम्स को स्पेसिफिकली वो चेक करता है. सो दैट्स वाई द थिंग इज कि अगर आप एल्गोरिदम प्रॉपरली लिख पाए कोई भी चीज का, तो आप उसका प्रोग्राम अच्छे से लिख सकते हो. लेट इट बी एनी given programming language, right? So as a result of that, what you can do over here is, यहाँ पे whenever you are writing a statement in this way, I'll always suggest students to guarantee नहीं है हिमांशु,
चेक, अगर आप इतना लिखोगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे, इसका गारंटी कोई नहीं दे सकता। सी, बिकॉज द थिंग इज कि आप जितना ज्यादा अच्छे से आपका आंसर लिखोगे तो वहां पे आपको ज्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस है। एक लाइन लिखोगे तो एग्जामिनर्स आपको एक ही मार्क देंगे। ओके, सो अगर आपको फुल 2 मार्क्स चाहिए, आई सजेस्ट कि इसके साथ आप एक छोटा सा एल्गोरिदम लिखो, जस्ट से टू ऐड 2 नंबर्स। ये इस तरह का एल्गोरिदम्स आप लोगों ने आपके सी प्रोग्रामिंग में भी सीखा होगा, हाउ टू ऐड 2 नंबर्स। येस और नो, लेट मी नो इन द चैट एवरीवन। Do you know how to write an algorithm? Yes. Okay. So if you know how to write an algorithm, मैं हमेशा suggest करूंगी आप लोगों को that whenever you are going to write any text, support it always with an example. You will always get full marks there. सी, मेरा क्या इंटेंशन है, ये जो छोटे छोटे आंसर्स है ना, दीज छोटे छोटे आंसर्स शुड फेच यू कंप्लीटली गुड मार्क्स, फुल मार्क्स आपको मिलने चाहिए ये आंसर्स में, राइट। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी कैनॉट टेक अ चांस कि कोई हमारा मार्क्स डिडक्ट कर दे यहाँ पे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इट्स ऑलवेज अंडरस्टूड दैट इफ यू राइट एन एग्जाम्पल सपोर्टेड बाय थ्योरी, इट इज अंडरस्टूड टू द स्टूडेंट क्लियरली। Okay, so as a result of that, it is always requested that whenever you write a task, if you look at the marks, अगर आप 2 मार्क का आंसर लिख रहे हो और अगर आप एक ही स्टेटमेंट लिखोगे तो इन दैट केस मार्क्स आपको फुल मिलना थोड़ा मुश्किल है। बट इफ यू सपोर्ट इट विद अ algorithm, any example, so that will help you in getting full marks for this question. Okay, so am I clear with the first question as to if in this case of type of questions, if you are asked to define anything, you will be supporting it with an example to get good marks. Am I clear with this, all of you? And shall I move ahead? Okay. Shall I move ahead, everyone? Next questions पे जाओ. Okay, ठीक है. Now, let's move. List any 4 applications of Q. The next question is list any 4 applications of Q. So, now whenever you write for a queue, I am writing an application for a queue. उसके पहले, now see, the question is 2 marks. So writing any 4 points will fetch you directly 2 marks. There will be 2 points, 1 mark. That is what is the strategy usually. Okay, or in short, you can say half mark for each point. The same thing, right? So you can just stick yourselves to write down only applications of queues. इतना ही आपको लिखना है। आपको आगे पीछे का ज्यादा एग्जाम्पल्स देके ज्यादा व्हाट इज अ क्यू ये सब ज्यादा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका क्वेश्चन आपको स्पेसिफिकली बोलता है लिस्ट एनी 4 एप्लीकेशंस ऑफ क्यू। सो आपको सिर्फ 4 कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशंस ढूंढ के क्यूज के लिए लिखना है।
Am I audible now, everyone? Kindly let me know. Hello? Yes. Okay, I'll start again, everyone. Okay. Everyone, check. Applications. I was just explaining you the first application. Okay. So, first application is when you are in a queue. Okay. If you are trying to maintain a queue for all the processes for their scheduling. Okay. अगर आप शेड्यूलिंग के लिए क्यू यूज कर रहे हो, सो व्हाट हैपेंस, सी जस्ट टेक एन एग्जांपल. आप एक ऐसा एग्जांपल ले लो जहां पे फॉर एग्जांपल आपके लैब्स में, आपके कंप्यूटर लैब्स है, तो आपके कंप्यूटर लैब्स के अंदर लेट्स से एक लैब के अंदर देर इज अ सिंगल प्रिंटर, एक ही प्रिंटर है और बाकी सब सिस्टम्स उसी प्रिंटर को कनेक्टेड है, नेटवर्क प्रिंटर. ना फॉर एग्जांपल अगर मुझे प्रिंट कमांड देना है और लैब में फॉर एग्जांपल 15 कंप्यूटर्स है, 15 कंप्यूटर्स है और 15 कंप्यूटर्स से आप कमांड दे रहे हैं उसको प्रिंट करने का, तो प्रिंटर तो एक ही है, तो ऐसा नहीं होगा कि वो 15 कंप्यूटर्स का प्रिंट आउट साथ में निकलेगा, एक के बाद एक ही निकलने वाला है, राइट. सो जब वो एक के बाद एक निकलने वाला है तो वो कैसे सीक्वेंस बनने वाला है उसका. ओके, सो जो सबसे पहले आया वो तो पहले प्रिंट निकाल रहा है, सो वो आपका चला गया यहाँ पे, लेट्स से प्रिंटर नंबर P2 आपका पहले चला गया, लेकिन उसके बाद जो आ रहा है P3, उसके बाद लेट्स से P7, P8, P9, ये सब लाइन में रहेंगे और एक क्यू में रहेंगे जब तक आपका P2 का प्रिंट आउट खत्म नहीं हो जाता. up to the time P2 is not finishing, up to these time these others will be in the line, right. धीरे धीरे एक एक करके सारे प्रिंट आउट्स निकलने वाले हैं. सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, दिस इज व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ the first application of a queue. But this queue has to be in this way that all the elements, okay, whenever you're working, all the elements should be present one after the other for a scheduling. This process is the first application of queue. Is this understood to everyone? Okay, let's move on to the next application then. Okay. Yeah, so this is, it is used as buffers on MP3 players, iPod playlist, etc. Okay, now what happens over here when you are saying buffers on MP3 players? Now, whenever we have few songs in our playlist, okay, so what we do, if I want to, let's say, add or I want to play one after the other different songs, so what I do, I add everything to the playlist. So many songs, I add everything to the playlist. It doesn't get add, or it doesn't get played together. It always gets played one after the other, right?
So that is also the next real life application of a queue, that all these things will be played one after the other, right? See, Himanshu, we will go to 4 to 6 marks questions also, but we need to go in a sequence, right? I need to go in a sequence in this way. So that's why we need to complete these also and then 4 to 6 marks questions. So kindly wait. Okay. So moving on with the third one, used for CPU scheduling in multi-programming and time sharing systems. So what happens usually in multi-programming and time sharing systems is whenever you have many programs working together, right? So again, which processor will be using which program? For that reason, we have to mix and match all these programs once in a line, right? So as a result of that, we have to schedule all these things together and you are going to keep everything in a queue accordingly, right? In a real life, the fourth point, in a real life, call center phone systems will use queues to hold people calling them in an order until a service representative is free. This you must have observed in your day-to-day life also whenever you give a call to any call center, right? जब आप call center में call करते हो, तो most of the times you are on a waiting. Why you are on waiting is because your operator will be busy with some other person, and when that person is released or when that call is finished, then your call is put on the track and you are being using it, right? So that is how your this call center phone systems also work. Handling of interrupts in real time. अभी interrupt क्या होता है? Interrupt is whenever you are working with too many systems and एक system का आपको help के वजह से you are waiting for those systems to I mean in this way I can just demonstrate you what it is. Now let's say हमारे पास ऐसे बहुत सारे systems होंगे. Okay, now यहां से ओके सो यहाँ पे अगर आपको इंटरप्ट क्रिएट करना है, लेट्स से यहाँ पे एक प्रोसेसर होगा P1, यहाँ पे एक प्रोसेसर होगा आपका P2, ओके यहाँ पे अगर आपको एक इंटरप्ट क्रिएट करना है, जैसे यहाँ पे एक P5 प्रोसेसर है, तो P1 P5 के बिना वर्क नहीं कर सकता, P2 P5 के बिना वर्क नहीं कर सकता, इन दैट वे. सो दैट इज व्हाट इज एन इंटरप्ट व्हिच आई एम ट्राइंग टू क्रिएट. सो व्हेन आई एम ट्राइंग टू क्रिएट एन इंटरप्ट इन दिस वे, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा कि if all the systems are giving an interrupt to a common system, एक ही सिस्टम को अगर इंटरप्ट हम लोग भेज रहे हैं तो वो सिस्टम भी कितने सिस्टम्स का काम साथ में करेगा? इट कैन नॉट डू एवरीथिंग टुगेदर. सो एक के बाद एक. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी अगेन स्टोर्ड बैक इनटू अ क्यू ओनली. Last one is simulation. So simulation is just a way of demonstrating how a queue is working. So अगर मैं आपको बोलूं कि एक एडमिशन के लाइन में आप लोग खड़े हो जाइए. सो व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन अ लाइन ऑफ एन एडमिशन, वहां पे क्या हो रहा है कि एक क्यू है. फर्स्ट स्टूडेंट का जब फॉर्म सबमिट होता है तभी वो लाइन से बाहर निकलेगा, नेक्स्ट उसके पीछे ही आएगा, right? That's the status of a queue. So that is what is how this simulation takes place. Is this understood to all of you? Kindly let me know in the chat. Okay. Now let's go for the third question, that is define the following with respect to a tree: leaf node and a level of a node. Okay. Now what is a leaf node? A leaf node is the last
entry of your leaf, of your tree, right? This is your tree. ये आपका एक tree है, A, B, C, okay? Where A is the parent, B and C are the children, okay? So यहाँ पे आपका क्या हो रहा है? B and C are your leaf nodes. क्योंकि इनको leaf क्यों बोला जाएगा? Because they do not have their own children. इनका next level नहीं है कभी भी. So as a result of that, we are going to say that these are leaves. Okay. Now, this is what is a leaf node. A node without any child node is called as a leaf node. Node B and C are leaf nodes as shown in the above example. Okay. What is level of a node? You are going to say it's the position of a node in the hierarchy. Okay. Now, this is the hierarchy which is given to you, right? This is a parent A and B and C are the children. This is the hierarchy which is given to you. So that's why आपका हमेशा root node जो होता है, that is level 0. That is the first level. उसके बाद आएगा आपका level 1, level 2, level 3, level 4, etc. So यहाँ पे अभी आपका फिलहाल levels कितने हैं? 2 levels आपको मिलेंगे. So level 0 is going to be your root node and level 1 is going to be your leaf, क्योंकि आपने जो example लिया है वो example के हिसाब से this is correct. Now in case you take a different example जहां पे 2-3 levels हो, so based on that you have to explain your answer. Now let's take here Now let's say I want to take a tree in this way. Let's say this is A, then I'm going to take here B, then I'm going to take here C, then D, E, F, G in this way. So यहाँ पे अगर मैं आपको leaf nodes find out करने बोलूं तो which are going to be the leaf nodes? The leaf nodes are going to be D, E, F and G. These are going to be the leaf nodes because they do not have their own children now. But if I tell you to go for the levels of the trees, this is going to be level 0 because this is the beginning level. Then you are going to have level 1 and then level 2. So these are the levels. So based on how you take the example, you are going to give the answers over here. Is this concept clear, students? Shall I move ahead, everyone, with the next question? Okay, fine. So the next question is differentiate between stack and queue. Now everyone, please remember these are few of the questions which you can expect in every year of data structure examination. Difference between stacks and queues. So you are asking me important questions. So these are kind of important questions which need to be handled, right? So differentiate between stack and queues. Very, very important. Now, यहाँ पे any 2 points. Okay, so it's of 2 marks. So you can write maximum 2 or 3 points. इससे ज्यादा आपका लिखना जरूरी नहीं है. Okay, any 2 correct differences if you check what is the bifurcation here.
Any two correct differences will give you 1 mark each. ठीक है. So in case you are able to write 2, or specifically I'll say if you feel there is a doubt in the second difference point, so you can use a third difference point, but not more than 3, because unnecessary, even if you write 5 to 6 points, आपको marks उतने ही मिलने वाले हैं. So better ways, you don't go for so many complexities. आप सिर्फ 2 या 3 ही एक्सपेरिमेंट सॉरी 2 या 3 ही डिफरेंशिएशन पॉइंट्स रखो. ओके, सो फर्स्ट थिंग, you know, in a stack we use only a single end for entering the data, and in a queue we use 2 different ends for entering the data, right? That is one thing that can be the first. हिमांशु, अगर 4 मार्क्स के लिए लिखना है तो आप लोग 4 या 5, मैक्सिमम 5 लिखो, उससे ज्यादा मत लिखना. ओके, 4 पॉइंट्स भी इनफ होते हैं, बट इन केस अगर आपको लगता है कि एक आधा पॉइंट आपका इतना अच्छा डिफरेंशिएशन पॉइंट नहीं है, तो आप 5 पॉइंट लिख सकते हो. ओके, okay, fine. So first point is just differentiation between that the stack starts at the same end, but the queue, the insertion and the deletion are done at 2 different ends, which are called as the front and the rear respectively. So you know it. Second one is in a stack, since there is only a single end through which we are transferring the data, so we usually call this as a last in first out type of data structure. Whereas in a queue, what we say, it is first in first out type of data structure. So that we need to understand. Okay. In a stack, third point, in a stack only one pointer is used, that is called as the stack top. And in a queue, there are 2 ends, that is the front as well as the rear. Okay. तो दोनों ends आपको देखने पड़ेंगे, right? Then examples we have specified over here, that is what is the example of a stack, that is stack of books. An example of a queue is students standing in a line at a fees counter. Okay, and then applications. आप stacks कहाँ पे use कर सकते हो? You can use it in recursion. You can use it in polish notations, that is your prefix to postfix conversions. And applications of queues, if you check, are इट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. हमने एप्लीकेशंस ऑफ क्यूज जस्ट फर्स्ट क्वेश्चन में ही रेफर किया है, सो आप वहां से ही एप्लीकेशंस यहाँ पे कंप्लीटली डाल सकते हो. सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैक एंड अ क्यू. Kindly let me know in the chat if this is understood or no. There is also a 6th point which is put over here, that is an example of a stack, representation of a stack as well as a queue. Okay. So just let me know whether you have understood this or no in the chat. Okay, then we'll move ahead. I'll go with the next question. So next question is, describe undirected graph with the help of a suitable example. Now guys, there are 2 different types of graphs. One is an undirected graph as well as a directed graph. Am I audible, everyone? Okay, fine. So
If you check, there are two types of graphs. Now, the first type of graph is called as a directed graph. That is, let's say I am taking a graph in this way where I am maintaining the directions. That is, the directions are in this way that A is directed towards B. That is, you have a node from A to B. Then you have a node from B to D. Then you have a node from D to C and a C to A. This is what is a directed graph. Whereas in case if you are not maintaining any directions in this way, so this is called as an undirected graph. Now the problem is, in an undirected graph, I just cannot tell you whether the edge goes from A to B or an edge goes from B to A. I cannot tell you in this way, right? But the thing is ki you have connections, but the directions are going from which place to which we are not able to tell you, right? So as a result of that, this is what is your undirected graph. Okay, so your question says describe an undirected graph. So we are going to describe an undirected graph over here as a graph in which the edges do not have any direction associated with them is known as an undirected graph. जैसे ये जिसमें आप अगर एग्जाम्पल देखोगे तो आपके पास कोई भी directions नहीं है. This is an indirected graph. And with suitable examples. So the question themselves says that you have to have a suitable example. तो आपको कोई भी not necessary यही graph बनाना है, but you can take any other graph and you can draw. But example is mandatory. Remember the bifurcation of marks. Definition will take 1 mark and the example will take 1 mark. Okay. Yes, Himanshu, directed graphs will have arrows because you are showing the directions. Whereas undirected graphs, you cannot specify any direction. So as a result of that, we will never have any arrows specified. Am I right? So this is, so we say that in the above example, each edge is bidirectional. Why we say bidirectional is because I do not know whether the entry goes from A to B or it goes from B to A. We cannot say that. So as a result of that, we say it is bidirectional. So this is what is the concept of undirected graph and explanation with the help of an example. I hope this is clear to all of you. If yes, kindly put it in the chat so that we can move ahead. Okay, what about other students? Only 1 or 2 students are responding every time. Okay, fine. So I'll begin with the next question. Define the terms linear data structure and non-linear data structure. Now this comprises of your first basic unit. So what's the difference between linear data structure and a non-linear data structure? Okay. So in your syllabus, you have studied a gist of both the types. That is, you have studied what is a linear, what is a non-linear also. So what is basically a linear data structure? A data structure in which all the data elements are stored in a particular sequence is called as a linear data structure. जैसे for example, हमने stacks and queues, okay? हमने stacks and queues देखा था. तो यहाँ पे if you check in a stack, sorry, if you check in a stack, you had the elements entered in this way, one after the other, but in a sequence. Same way in a queue, you had the elements entered one after the other in a sequence. So whenever you have the elements being entered to you people in a sequence, we call it as a linear data structure. Whereas whenever you have elements stored in a non-linear fashion, that is a graph or a tree. Now let's try and understand.
graph example you already have over here. This is not a linear structure, right? आप कहीं से भी डेटा एंटर कर सकते हो यहाँ पे. This is a graph. अगर आप ट्री बनाना चाहो, so it will be in this way. This way. So अगर आप ट्री बना रहे हो, this again is a non-linear type. Okay, so this is what is the difference between a linear and a non-linear data structure. So as per the marking scheme prescribed by MSBTE, if you check example along with the definition of linear data structure and an example of linear data structure, you are going to get 1 mark, and the definition of non-linear data structure as well as an example of non-linear data structure, you are going to get 1 mark. So this will comprise of completely 2 marks for this given question. If this is understood to all of you, kindly let me know in the chat so that we can move ahead. Okay. Okay. Now this is the next question is conversion of infix expression into prefix expression. Now, whenever you go to convert infix to prefix, there are many different ways in which you can check out this answer. Okay. Now, in this paper, there is one specific way which has been explained, but it's not necessary that you have to follow this rule only. You can follow some other rule also and you can get the correct answer. Okay, so as of now, we will be discussing this method only, how this method has been executed. So in conversion from infix to prefix, what they have done is they are scanning the input instead of left to right, we are scanning it from right to left. Okay, the only reason behind it is we are converting it into a prefix expression. Okay, so as a result of that, you can scan from right to left. You can also scan from left to right. The only difference is going to be the way in which you are going to input the way is, or the way in which you are going to get the correct answer is different. Okay, so I'll first explain you this way how this thing is occurring, and after this I will be explaining you a better way in which you can go for prefix conversions, which will be slightly easier, I think, for students, right? Now, let's move with this way. I start my scanning from right to left. So what is the algorithm is very simple. The algorithm is in this way. You will be reading each and every character, and whenever you read a character, if it is a character, you put it in the prefix expression, and in case it is an operator, you are going to put it into the stack. That is what is the idea, right? Now, let's start with F. This is a character, so you are going to put it in the prefix expression. Next is, after you move F, next comes plus. So plus is a stack operator, so you put it in the stack, but your prefix expression remains F. Next is this bracket, that is a closing bracket. So whenever there is a closing bracket, now closing bracket, now see here, whenever you are entering the values into the, what do I say? Stack, you need to remember that you always have to take care that higher precedence comes over the lower precedence. That care you need to take, otherwise you have to pop the elements accordingly. That's the case. Okay, so I am inserting the lowercase brace over here, right? And I am putting F, because if it is a lowercase,
right? I cannot do anything with that lowercase brace unless and until I have an operator. So I have no options. I'm pushing it into the stack, right? Then I move with G. So G is anyways a operand. So I keep it with this. But the only thing is I'll not place it after F. It has to be before F because I am moving in a reverse direction. So it has to be before F. The next value which I have is a division operator. So when I have a division operator has higher precedence, you can say, as compared to plus. So that has come above your plus operator in the sequence of stack. Next is C. So C is before G because it's an operand. Next comes opening brace. Now, when you have an opening brace, guys, when you are inserting an opening brace is going to have a higher priority. You can say highest priority because our priority level always starts with B, that is brackets. So I need to pop out the elements. तो मुझे किसको pop करना पड़ेगा? उसके नीचे वाले को pop करना पड़ेगा. So उसका नीचे वाला कौन सा है? That is your division operation. So I'm going to pop out the division operation. I have popped out the division operation and I have placed it into the prefix expression. Okay. And I am now not taking care of this brace, this bracket. Okay. Because this bracket is making no more sense क्योंकि उसका ओपनिंग ब्रैकेट चला गया है. अगर उसका ओपनिंग ब्रैकेट चला गया है तो क्लोजिंग ब्रैकेट रखने का कोई सेंस नहीं बनता. सो यू कैन डायरेक्टली डिलीट इट फ्रॉम योर स्टैक, राइट? So this is the condition of the stack. Now I start with the opening brace. When I'm putting an opening brace over here, I have plus. So we saw that we popped out the things and we have completed our part. Next is multiplication. When we are inserting multiplication, see, multiplication has higher precedence as compared to plus. So multiplication can be above plus. That's not an issue. So wo chalega. Next is I have a closing brace. So closing brace anyways has a lower precedence, lowest precedence you can say. But I cannot pop anything unless and until I get an opening brace. So as a result of that, I can push it and I can keep it as it is. Then B comes with directly you can put it in the prefix expression. Then comes plus. So plus is anyways you can say greater as compared to closing brace. So this plus is greater than closing brace. So as a result of that, you can put this plus above the closing brace and you can move ahead. Next is A. A goes directly into the prefix expression. Now the problem is whenever I am putting the opening brace. Whenever I say there is an opening brace, so opening brace जो होता है, opening brace is highest priority, तो उसके आगे वाला एलिमेंट आपको पॉप आउट करना पड़ेगा. तो उसके आगे वाला एलिमेंट कौन सा था? प्लस. सो आपने प्लस को पॉप आउट किया यहाँ पे. यू हैव पुट द पॉप आउट प्लस ओवर हियर. आपका क्लोजिंग ब्रेस निकल जाएगा क्योंकि आपका ओपनिंग ब्रेस ही चला गया है. तो देयर इज नो सेंस ऑफ द क्लोजिंग ब्रेस. दैट आल्सो गेट्स रिमूव्ड. नाउ देयर इज नो इनफिक्स एक्सप्रेशन रिमेनिंग ओवर हियर, बट यू हैव टू मोर एलिमेंट्स इनटू द स्टैक. सो यू हैव टू पॉप देम वन बाय वन. सो सबसे पहले हायर प्रेफरेंस पॉप होगा, दैट इज मल्टीप्लिकेशन. उसके बाद लोएस्ट प्रेफरेंस पॉप होगा प्लस. एंड दिस इज व्हाट इज योर इनफिक्स टू prefix conversion. Is it understood to all of you? Kindly let me know. Is this understood, everyone?
Kindly let me know in the chat. Okay. So now what we can do is we will take this same question and try to solve it in a different way. Okay, we will just try to solve it in a different way. So I'll just make a note of this question, everyone. A plus B. Like A plus B into C divided by G to C divided by G plus F. This is the question, right? Now, how we go forward with this question, everyone? Please note, scanning from left to right. If I am scanning from left to right, I just have to check the precedence of the operators. Now, first precedence will always be given to the brackets, right? So, we are going to scan from left to right. So, first with the brackets. Now, let's say, यहाँ से अगर मैं scan करती हूँ, तो first bracket I am getting is A plus B. So, I am converting it into AB plus. Okay. I am still keeping the brackets over here to avoid any confusion. We will see it later on, how to remove these brackets. Next, when I scan, I am going to say CG division. Please check, this is prefix notation. So the operator has to come before the operands, right? So I have done this CG and then I'm saying plus F, right? This is the case. Now, when I go for solving this further, okay, from left to right, which is having higher precedence, multiplication has higher precedence as compared to plus. So as a result of that, मुझे ये पहले execute करना पड़ेगा. So I have to say multiplication plus AB division CG. This is the case, okay, and plus F. Now you have only one operand, sorry, one operator plus and two operands. This is your operand number 1 and this is your operand number 2. So what you do, plus multiplication, that is this plus comes at the front, plus multiplication plus ABCGF. Please verify this with the previous answer. The answers are correct. Both the answers are same. Okay. Only thing is, this is a little simpler way of solving the things. So if in case you want to cross check your answers, इतना बड़ा स्टैक के साथ कैलकुलेशन करने के बाद अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हो आंसर, तो if you want to cross check, you can just cross check and see whether you are getting the correct answer or no. Is this understood, everyone? Okay, priority. How I am deciding the priority? Students, remember in your previous days mathematics, you have studied this rule, Bedmar's rule, that is brackets, exponentials, division, multiplication, addition,
and subtraction. ठीक है. Now this is the way you are going to decide the priority. सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी ब्रैकेट्स को मिलता है. जो भी ब्रैकेट्स में है उसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगा. उसके बाद अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल साइन है, so that exponentials have to be taken care. Division, multiplication have the same precedence. Addition, subtraction have the same precedence. So अगर आपको डिविजन और मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है तो दोनों में से लेफ्ट साइड वाला ऑपरेटर को सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस आपको देना पड़ेगा. नो इश्यूज, वील सॉल्व वन और टू मोर थिंग्स on the same. Okay, is this part understood, everyone? इसका postfix क्या होगा? Okay, I'll let you know what will be the postfix also. Just give me 2 minutes. First you let me know whether this preference कैसे set करना है, ये समझ में आया क्या तुम लोग को? ओके, ठीक है. I'll repeat this again, this prefix expression for everyone. So this is the question, right? I'm again repeating, everybody please note prefix expressions. I start by keeping this rule in mind. I'll write down the rule here. Okay, I'm writing the rule over here, bedmass rule. Right? So I start from left side. When I'm starting from left side, I am checking the brackets first. कौन सा पहला bracket आ रहा है? This bracket. So I'll be solving this in a prefix mode. So prefix mode में कैसा आता है? Plus AB. बराबर. Then I'll keep this into as it is. ये आपका फिर से bracket है. You want to convert this into prefix. So this is going to be division CG plus F. Okay everyone. Now here if you check, if this is the given expression, इसको आप कैसे execute करोगे? Now you have two operators remaining, multiplication and plus. दोनों में से पहला precedence किसको आना चाहिए? Multiplication. So मैं कैसे solve करती हूँ? Multiplication plus AB division CG plus F. Right? अभी एक ही ऑपरेटर बचा है plus, so it's going to be plus multiplication plus AB slash CGF. This is what is your prefix expression. Is this understood everyone now? Which last step? Last step is addition, this plus, right?
So this is your first operand now and this is your second operand now. Right? So when you have this as the first and the second, ये plus ही एक ही operator बचा है ना, तो this has to come before the first operand. Plus, how did it come first? Multiplication has more importance ना. अरे multiplication is having more importance, but multiplication जो है ये आपका अभी एक ऑपरेंड ही हो गया ना, ये कंप्लीटली आपका ये आ गया ना इसके पहले ही. और मल्टीप्लीकेशन इंपॉर्टेंट उसके पहले है, बट डज नॉट मीन कि मल्टीप्लीकेशन ही पूरा ऑपरेशन करेगा, बाकी ऑपरेशंस भी तो है. राइट? सो प्लस कैन कम बिफोर, यू आर नॉट यूजिंग अ स्टैक हियर. मल्टीप्लीकेशन के आगे आपका प्लस आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें. द ओनली थिंग इज जब आप एग्जीक्यूट करोगे तब ए एंड बी के ऊपर मल्टीप्लीकेशन ही एग्जीक्यूट हो, सॉरी ए एंड बी के ऊपर प्लस एग्जीक्यूट होगा और ये दोनों के ऊपर मल्टीप्लीकेशन ही एग्जीक्यूट होगा. Is this now understood? Shall we move ahead? Yes, no? Yeah, we will do the postfix. First, let me get an idea whether this prefix part is our understood or no. Okay, fine. ठीक है. So let's move with the postfix expression. So for the same question, what is the postfix expression? Check. Move from left to right. Okay. So when you are moving from left to right, brackets आपको सबसे पहले सॉल्व करने हैं. So ये हुआ आपका, right? This is a bracket. This is a bracket. So what you have done, आपने इसका postfix format में convert कर दिया, right? Now again when you move from left to right, you are going to check which is the more preference operator, multiplication या plus. So it's AB plus, its multiplication is higher precedence, so it's AB plus CG division into, that is into has gone after that because it's a postfix expression, plus F. Now there is only a single operator remaining, so AB plus CG dollar into F plus. This is what is the postfix expression. Understood everyone? Okay.
Okay, just give me 2 minutes, then we'll move with the next questions of 4 marks relevant ones, right? Just give me 2 minutes. Fine, let's start, everyone. So describe the working of linear search with an example. Now, this is the kind of, am I audible, everyone? Okay, fine. So linear search, if you check, these are kind of searching algorithms. The simplest searching algorithm is a linear search algorithm, right? So this is a 4 marks question. So in this kind of 4 marks question, what you are expected to write, okay? So if you see the bifurcation on the right hand side, description will take 2 marks and correct example will give you 2 marks, okay? So what all description you are supposed to write over here? Linear search, the search element is compared with each of the element from the list in a sequence. देखो linear search किस तरह से work होता है? Just give me a minute. Okay. So basically, if you check linear search algorithms, how do they work? If you have some 20, 30, 40, 50, 60, these elements, right? Now in these elements, now if you check students that I want to search 40, तो लीनियर सर्च क्या करता है, वो पहले इसके साथ चेक करेगा, आर यू 40, नो. नेक्स्ट इसके साथ चेक करेगा, आर यू 40, नो. उसके बाद इसके साथ, इफ दिस इज 40, यस कर देगा वो.
else no. Okay, understanding? So this is what is your linear search. So this is the simplest kind of search algorithm which you have to do. So यहाँ पे आपको exactly लिखना पड़ेगा कि the element which I am searching उसके साथ मुझे हर एक element को टेस्ट करना पड़ेगा and I need to find out whether the element of my interest I am reaching on. Okay, ये एक बार आपका हो गया. If you get the element into the array, you can say that the element is present. Otherwise, you are going to say that the element is not present. Okay. In the linear search, the search element is compared with each and every element from the list in a given sequence. Comparison starts with the first element and it continues till you get the found the number that you want to search, or there is no further, that number is not at all present in the given list, right? As each element is checked with search element, the process of searching requires more time. Okay. So as each and every time the element is checked, okay, the searching time will require more time, क्योंकि अगर let's say take an example कि आपका जो element है वो सबसे last present है, तो सबसे ज़्यादा time लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, right? So इसके लिए उसका time complexity दिया गया है, that is big O of n. So big O of n किस basis पे calculate किया गया है? जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतना आपका सर्चिंग होगा. सो n रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इसलिए वी रिप्रेजेंट इट एज बिग O of n. Linear search on a sorted array. If the array is sorted, search takes place till element is found or comparison reaches to an end greater than the search element. So in case अगर आपका array sorted है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये array लिया जाए, this is a sorted element, sorted array. If I want to search 40, so either you will get 40 or you will land up at an element which is greater than 40. So if it is greater than 40, there is no sense of going ahead, क्योंकि anyways it's a sorted array. So either I will have the data before 50 or I will not have that data. That intuition you need to maintain. Okay. एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे आपको, जहां पे 10, 20, 30, 40, 50 is given and you are searching the element 30. सो ये आपको एक प्रॉपर इटरेशंस के साथ उसके एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया गया है. 10, 20, 30, 10 इन दिस वे. जब आपको 30 मिल जाता है, आप लोग बोलते हो नंबर फाउंड, अदरवाइज यू से दैट द नंबर इज नॉट फाउंड इन केस you do not get the number. So this is what is your linear search. Is this understood to all of you? Any doubts here? Is it understood? Shall we move ahead? Students, I need answers from you. If you are not giving me answers, it's very difficult for me to understand sitting here. Okay, fine. We move ahead. Describe the concept of a linked list with the terminologies node, next pointer, null pointer, and empty list. Okay. Now, what is a node? In a linked list, you have seen earlier also that in a linked list, how a linked list is defined, it has two parts basically. Okay. So one part is the information and the next part is the pointer to the next node, right? So you need to first explain, it's since a 4 marks question. So you need to explain the concept of linked list in brief.
Along with that, you are also supposed to explain the node, next pointer, null pointer, empty list. All these 4 points explicitly will give you complete 4 marks. Okay, so that is how you are supposed to write down. So let's start. Each data element in a linked list is represented as a node. Okay, so node contains 2 parts. So it's going to be the data as well as the address. Okay, and next pointer, right? So next pointer is, let's say if I want to go to the next location, मुझे next memory location पे जाना है. So that's what, how I'm going to go. So if you just see the output over here, so this is the next pointer which is pointing to the next node. So ये आपका हो गया next pointer. Third is null pointer. In case you are having the last element, आपका last element है, last element is not going to point to any other element further. तो जब वो दूसरे किसी को point नहीं कर रहा है, so उसका जो next वाला memory address होगा वो क्या होगा? So we can put it as null, right? So that we can do here. And the last one is an empty list. If you have a linked list जहाँ पे it consists of no data, that is वो linked list शुरू ही नहीं हुआ है, तो उसका header node जो होगा उसका header node null हो जाता है. तो that you can put here as a empty list. Is this understood to all students? All these 4 definitions with proper examples will fetch you complete 4 marks. Shall I move ahead? Yeah, that's what empty list. Empty list is this list. That is, you do not have a linked list only. So इसलिए आपका पहला नोड जो है हेडर नोड, वो हेडर नोड ही आपका नल है. That is what is an empty list. Okay, shall I move ahead? ठीक है. Next question. What about the other students? Other students are not at all responding. I want all the students to respond. Shall we move ahead, everyone? Okay, moving ahead, the next question is,
Describe Q full and Q empty operation conditions on a linear queue with suitable examples. Now this is with respect to a linear queue only. So what you are simply supposed to do, say this is 4 marks. So 2 marks will be for Q full, 2 marks will be for Q empty. Okay. So 2 marks in Q full में क्या क्या होगा? 1 mark will be what is Q full and 1 mark will be example. Okay. वैसे ही आपका Q empty चलेगा. So if you check over here, आप Q full क्या है वो बता सकते हो. What is basically Q full? When your Q is completely full and when you are trying to insert another element. तो आप अगर insert करना चाहो एक element तो आप insert नहीं कर सकते because आपका Q is already full. So that is what is a Q full operation. Same way, we have taken an example over here and see this is full because your rare is at the max level. And now if I am telling you to insert any element into the queue, you won't be able to insert it. Okay. So that is what is a queue full operation. Same way we can go for what is a queue empty operation. So queue empty operation क्या होता है? When your queue is completely empty and I'm telling you to delete something from that queue. Okay. So you can write down first what is a queue empty position. And then if it is completely empty, if I'm telling you to delete something from that queue, it's a queue empty part. So that's why this is also a null and void situation. So this is how you can fetch 4 marks over here. Is it understood, everyone? Shall we go ahead, everyone? Okay. Check, everyone. I'm repeating this queue full and queue empty. Now let's try with the help of, I'll just draw something and show you here. Check, everyone. In case I have a queue here, okay. Now let's say the queue is completely full. Let's say 1, 2, 3, 4, 5. Okay. The queue is completely full. अब ये जब queue आपका completely full है, so this is your front end, this is your rear end, right? आप जब एक कोई नया एलिमेंट ऐड करते हो, वो नया एलिमेंट कहाँ रेयर एंड से ऐड होता है. जब आप रेयर एंड से ऐड कर रहे हो आपके पास क्यू में स्पेस ही नहीं है बिकॉज क्यू का स्पेस ऑलरेडी फुल हो गया है, राइट? सो दिस इज व्हाट इज अ क्यू फुल ऑपरेशन. तो आप इंसर्ट नहीं कर सकते इस केस में, राइट? सेकेंड थिंग इज क्यू एम्प्टी. अगर ये आपका क्यू है, आपका ये पूरा क्यू खाली है और मैं आपको बोल रही हूं डिलीट करो क्यू में से, डिलीट फ्रॉम द क्यू. अगर आप डिलीट करना चाहो क्यू में से आप नहीं कर सकते क्योंकि आपका कंप्लीट क्यू एम्प्टी है और आपका जो फ्रंट है वो फ्रंट इज, दिस इज 0th पोजीशन, राइट? सो 0th पोजीशन पे नहीं, फ्रंट इज एट -1th पोजीशन, रेयर इज ऑल्सो एट -1th पोजीशन. सो दैट इज बिफोर 0, दैट इज कंप्लीटली एम्प्टी केस. सो व्हेनेवर योर queue is completely empty, your front and rear is at -1. now if I am telling you to delete anything from the queue, आप delete क्या करोगे? आप कर ही नहीं सकते कुछ भी डिलीट यहां से, राइट? सो दिस इज व्हाट इज योर queue empty operation. Is this understood to all of you now? Please let me know into the chat. ओके, ठीक है. Moving ahead. Next is difference between a general tree and a binary tree. Okay, so what all basic differences you have between a general tree and a binary tree? So the question is 4 marks. So whenever the question is 4 marks, I have told you you can go for exactly 4 differences
But in case if you feel that your differentiation points are not that good, then you can go for a fifth point. Otherwise, avoid. If all the 4 points are very genuine points, you do not have to move to any fifth point, right? So what is a general tree? A general tree is a data structure in which each node can have infinite number of children. Now, if you check over here, if you check over here, a general tree, let's say this is A, it can have multiple children like B, C, D, E, etc. This can be a general tree. Okay. But if you check a binary tree, for a binary tree, it is mandatory that an A will have only 2 children, that is a left child and a right child. Not more than 2 children allowed in a binary tree. Okay. This is the first restriction which you need to put. That is, a general tree can have any number of children allowed, but a binary tree specifically has to have only 2 children. Correct? Moving ahead. In general tree, root has in degree 0 and maximum out degree n. In a binary tree, the root has in degree 0 and maximum out degree 2. Same thing. See, what is an in degree and an out degree? In degree is number of incoming nodes. It's number of incoming nodes. Whereas your out degree is number of outgoing nodes. Okay. Now, if you check in a normal general tree, if you check, this A is a parent. So, as a result of that, it is going to have no in degrees. Yani there will not be any incoming nodes. But there are going to be multiple outgoing nodes because it may have multiple children. But in case of a binary tree, again, the root is going to have 0 in degree because you are not going to have any input nodes, but you are going to have exactly 2 outgoing nodes because you are going to have only 2 children over here. Next is in a general tree, each node having in degree 1, in general tree, each node have in degree 1 and maximum out degree n. Okay. In binary tree, each node have in degree 1 and maximum out degree 2. So, in case you are going for any kind of in degree calculations, so in a general tree, you can have maximum 1 in degree, but out degree can be anything. Same way for a binary tree, you can have maximum 1 in degree, but out degree can be only max to max 2, right? Height of a general tree is length of the longest part. Height of a binary tree is again height of, see how to calculate height of a tree. Now let's say I am going for a general tree. I'm going for a general tree. This way. Let's say this is our general tree. Okay. Now, it has multiple children, so we can consider this to be a general tree. This is not a binary tree. इसका height अगर मैं आपको calculate करने बोलूँ तो height is going to be the longest path, longest level up to which the tree has gone. So let's say ये है, this is first 1, level 1, level 2 and level 3. अगर इसके नीचे भी कुछ होता है इस तरह से, okay, so this is level 4. So the height of this general tree is going to be 4. Okay, but if you are calculating for a binary tree in this way, A, B, C, तो इसके लिए क्या है? इसके लिए फिक्स्ड होगा कि आपके पास 2 चिल्ड्रन ही हो सकते हैं. So as a result of इसका जो height होगा, it will never have any node which is completely going very long and the others are not going that long. So as a result of that, you will have 1, 2. So the height of the tree will be 2. This is the maximum height of any of them. But यहाँ पे कैसा होगा? Maximum height of the
only node which is moving in a higher direction, right? So that you can consider here. Kindly let me know whether you have understood or know these concepts into the chat before moving ahead. Okay, fine. So moving ahead, we have given an example of general tree and binary tree over here. Subtree of the general tree. Just a minute. Okay, fine. So here you can see one example of a general tree and a binary tree is also expected, right? यहाँ पे अगर आप जनरल ट्री एंड बाइनरी ट्री का डायग्राम ड्रॉ करोगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा बिकॉज देखो एक चीज हमेशा याद रखो बीइंग अ स्टूडेंट जब भी आप पेपर लिखते हो ओके diagrammatic representation always has a good influence on the examiner okay examiner को समझ में आता है कि स्टूडेंट ने पढ़ाई किया है बिकॉज अगर आप डायग्राम से अगर आप एग्जाम्पल से कोई भी चीज एक्सप्लेन कर पाए ना तो थ्योरी अगर आप कभी कभी कम भी लिखोगे स्टिल द पर्सन विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स राइट सो इसके लिए आप कोशिश किया करो कि आप थोड़ा डायग्राम्स आप थोड़े एग्जाम्पल्स ज्यादा दोगे whenever you are writing the papers, right? Moving ahead with the next level of questions, that is C program for deletion of an element from an array. Shall we begin with this now, everyone? Okay. So C program for deletion of an element from an array. So this is a 4 marks program students. So आपको complete 4 marks तभी मिलेगा जब आपका प्रोग्राम completely proper होगा. Okay. कहीं पे भी अगर आप सेमीकोलन भूल जाते हो या स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी मिस्टेक्स भी सिंटैक्टिकल एरर्स जिसको बोलते हैं वो भी अगर आप करने लगते हो तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट कंप्लीट मार्क्स ओवर यू राइट बिकॉज ये एक प्रोग्राम है तो प्रोग्राम में आपका प्रोग्राम जब तक कंप्लीटली राइट नहीं होता तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं होता राइट लेट्स स्टार्ट सो हाउ टू राइट अ प्रोग्राम यू ऑलरेडी नो मैं सिर्फ थोड़ा सा ब्रश अप कर देती हूँ सारी चीजें ओके सो हैश इंक्लूड stdio.h देन यू स्टार्ट विद द मेन फंक्शन आपने एक एरे डिक्लेयर किया है 100 साइज का यू आर टेकिंग पोजीशन यू आर टेकिंग सम वेरिएबल cnn एंटर द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओके सो आप डिफरेंट एलिमेंट्स यूजर से पहले बता रहे हो कि हाउ मेनी एलिमेंट्स आप आपके एरे में चाहते हो बेस्ड ऑन दैट आप स्कैन करके वो डेटा ले रहे हो देन आफ्टर दैट यू आर टेलिंग द यूजर टू एंटर द एलिमेंट्स नाउ ओके अगर मैंने लिखा है 5 तो 5 एलिमेंट्स एंटर हो जाएंगे ओके सो यू विल एक्सेप्ट इट फ्रॉम द यूजर तो उसके लिए इंस्टेड ऑफ इटरेटर आई दे आर यूजिंग अ इटरेटर सी
सो इसके लिए हमने लिखा है C इज इक्वल टू 0, C लेस देन N, दैट इज साइज ऑफ द array C प्लस प्लस. ओके, scanf %d address array C. ओके, then the next point is you are asking the user location where you wish to delete the element. Okay, आपको कहां से एलिमेंट को डिलीट करना है, that you are asking the user, right? So वो पूछ रहे हो तो यूजर आपको बोलेगा which position. Now let's take let's take an example in this way. Let's say this is an array, it's 10, 20, 30, 40 and 50. मैंने ये एलिमेंट्स यूजर से एक्सेप्ट कर लिए. अब मैं बोलती हूं इसमें से कोई एलिमेंट को डिलीट करो. लेट्स से मुझे ये पोजीशन का एलिमेंट को डिलीट करना है ना. अब ये पोजीशन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पहली चीज है कि आप डायरेक्टली ये पोजीशन के एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं. दूसरी चीज ये है कि अगर मुझे ये एरे को शिफ्ट करना है, क्योंकि अदरवाइज मेरा एरे कैसा होगा, बीच में से खाली हो जाएगा. सो दैट शुड नॉट हैपन. सो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 40 50 को आगे शिफ्ट करना पड़ेगा. सो इसके लिए लॉजिक डेवलप करना पड़ेगा. पहले तो आप 30 को डिलीट करेंगे, दूसरी बात आप 40 एंड 50 को आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे, राइट? दैट यू हैव टू डू. सो my dear, I have already explained infix to prefix in the previous in the previous 1 hour only I have explained that. I'll see if time permits, I'll explain you again. Okay, but right now let me first complete this topic and then I'll explain that thing again. Okay, okay, so हम क्या कर रहे हैं, एंटर दी लोकेशन वेर यू विश टू डिलीट द एलिमेंट. जैसे ही वो हम लोग अभी पोजीशन एंटर कर रहे हैं, लेट्स से हमारे केस में पोजीशन क्या है 2, बिकॉज आपका एरे शुरू होता है 0 से. सो दिस पोजीशन इज 0, 0 1 2 3 4 इन दिस वे. ओके, सो अगर मैं 2 से डिलीट करना चाहूं, राइट, सो हम क्या करेंगे, this is the position. If position is greater than equal to n plus 1, what is this? I am checking whether the position is out of the scope of the array. Scope of the array का meaning क्या? अभी जैसे मेरा n क्या है, my n is number of elements in the array is 5. अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे 6th एलिमेंट डिलीट करना है, साइज क्या है 5 है, राइट? अभी अगर मैं बोल रही हूं कि मुझे 6th एलिमेंट डिलीट करना है तो मैं नहीं कर सकती, राइट? क्योंकि 6 एलिमेंट है ही नहीं मेरे एरे के अंदर. आई नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, राइट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आई एम फर्स्ट सेइंग दैट if position whatever the user has entered is greater than equal to n plus 1, we say printf deletion not possible. So it's not possible. Else we are saying for c is equal to position minus 1, okay, c less than n minus 1, c plus plus, we are saying array c is equal to array c plus 1. What is this happening? मैं क्या कर रही हूं यहां पे, मैं मेरा लूप यहां से स्टार्ट कर रही हूं, पोजीशन से स्टार्ट कर रही हूं यहां तक, लास्ट तक. ये तो मैंने खाली कर दिया, ये एलिमेंट तो मेरा डिलीट हो गया. जैसे ये डिलीट हो गया, मैं क्या कर रही हूं, यहां से ये जो एलिमेंट है ये यहां पे शिफ्ट कर रही हूं, ये जो एलिमेंट है ये यहां पे शिफ्ट कर रही हूं. ये 2-3 एलिमेंट्स होंगे, इसके लिए हमने एक लूप लगाया. वी हैव टेकन अ लूप. ये लूप के थ्रू मैं ये एलिमेंट्स को इस तरह से आगे वाले एलिमेंट के साथ स्वैप कर रही हूं. आई एम जस्ट शिफ्टिंग देम and the resultant array, then I'm printing the resultant array. So मेरा resultant array किस तरह प्रिंट होगा, अभी फॉर एग्जाम्पल ये 30 निकल गया है, यहाँ पे 40 आ गया, यहाँ पे 50 आ गया, तो मेरा resultant array क्या प्रिंट होगा, 10 20 40 and 50. This is how my array is going to be printed. Is this concept understood to all of you? Kindly let me know into the chat.
Okay, fine. ठीक है. So before I move ahead, guys, one student has an issue in infix to prefix. So I'll just explain you what is that infix to prefix by taking any dummy example over here. So I'll take the same example which was present earlier. तो यही एग्जाम्पल के साथ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे करना है और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे. ओके, सो दिस इज योर इनफिक्स एक्सप्रेशन. इनफिक्स टू प्रीफिक्स अगर आपको कन्वर्ट करना है, सो प्रीफिक्स का मीनिंग क्या है? योर ऑपरेटर शुड कम ऑलवेज बिफोर द ऑपरेंड्स. तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? अगर मुझे ये लिखना है ए बी, सो इसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा प्लस ए बी. ओके, नाउ मुझे एक प्रेफरेंस फॉलो करना पड़ेगा. तो प्रेफरेंस विल ऑलवेज बी फॉर द ब्रैकेट्स, देन फॉर द एक्सपोनेंशियल्स, देन योर डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट? सो आई एम सेइंग plus AB, okay, into, again this is your bracket, so this is going to be CG and division, and then I'm saying plus F. okay, क्योंकि ये दोनों brackets है तो इनको सबसे पहला preference मिला. उसके बाद I have two more operators remaining, plus and multiplication. इन दोनों में सबसे highest preference किसको मिलता है? multiplication को मिलेगा. So that's why multiplication किस पे रन हो रहा है? ये दोनों पे रन हो रहा है. So multiplication has to come before them. So multiplication plus AB divided by CG and plus F. This is remaining. Now only one operator remaining and two operands. So we are going to say plus multiplication plus AB slash CG and F. This is how we convert your infix to prefix expression. Is this understood to you now? Okay. For the student who actually wanted this thing, आपको समझ में आया? Okay, I'll move ahead then. Next question is convert the following expression into postfix expression. Give stepwise process. Okay, so this is your conversion of a problem from up into postfix expression. This is infix, आपको postfix पे convert करना है. So we have to see the process. Now this is first process. You also have a simple process which I can explain just after this. Okay, so first we'll go with the process which is expected in the examination, and then you can use another process for cross checking. Cross check करके एक बार देख सकते हो कि आपका आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं. Okay, चलो let's start. So opening braces. So again the rule remains same. Whenever you are going to have an operator, that operator has to go into the stack. Whenever you are going to have an operand, your operand directly goes into the postfix expression. Okay, so this is the case. First of all, आपका opening brace आ रहा है, so just keep it as it is, right? Then you are getting a, so you are putting it in postfix expression. Then you are getting a plus. So what you are doing with that plus, since this plus is having higher preference, so you are storing it into the stack. Next you get b, b is okay. Then you are getting a
एक्सपोनेंशियल वैल्यू, एक्सपोनेंशियल इफ यू चेक हमारा रूल क्या है, बेगमास, BEDMAS. So E is exponential which is higher as compared to addition. So higher symbol can always be stored before the lower symbol, right? So वो आप कर सकते हो. So that in that case you have done it in this way, right? Now the thing is जब आप multiplication डाल रहे हो, so जब आप multiplication यहाँ पे डालोगे ना, multiplication is having lower preference as compared to your exponential. So you cannot push something which is of lower preference over something which is higher preference. आप ऐसा नहीं कर सकते. लोअर प्रेफरेंस को हायर प्रेफरेंस के ऊपर आप पुश नहीं कर सकते. तो इसके लिए आपको हायर प्रेफरेंस का पॉप आउट नेसेसरी होता है, राइट? सो यू हैव टू नेसेसरीली पॉप आउट दिस हायर प्रेफरेंस. सो हम लोग ये पॉप आउट करके एक्सप्रेशन में लगाते हैं एंड देन वी पुश द मल्टीप्लिकेशन साइन. Up to this point, is this understood to everyone? Please let me know in the chat. Is it understood, everyone? Up to this point, shall I move ahead? Students, it's not an arrow, it's an exponential sign. It's called as an exponential sign. इसको arrow नहीं बोलते. Okay? So exponential sign जो है ये it is having a better precedence as compared to division, multiplication, addition and subtraction. Okay? ये exponential sign है. So as a result of that, ये exponential sign के ऊपर अगर आप मल्टीप्लीकेशन को लगाने जाते हो तो मल्टीप्लीकेशन इज लोअर प्रेफरेंस. सो इसके लिए आपको एक्सपोनेंशियल को पॉप आउट करना पड़ेगा, इसलिए हमने पॉप करके यहां पे डाला है और फिर मल्टीप्लीकेशन को पुश किया है. इज इट नाउ अंडरस्टूड? Okay, fine. So now after doing this, now we are done with this multiplication. Now I have an opening brace. So when I'm putting an opening brace anyways has a higher precedence. So you're going to put an opening brace. Then you get the input as D. So D is getting added over here. Next input which we are getting is division. Okay. Division is definitely inside the brace you can put any value, okay, because the preference will be mattering only when it gets the closing brace. So I have not got a closing brace, so as a result of that मैं यहाँ पे directly डाल सकती हूँ, right? Then when you get a closing brace, guys, the problem over here is when I'm getting a closing brace, I have to pop out the materials which are present in the स्टैक. ओके, सो पॉप आउट आपको तब तक करना है जब तक आपको ओपनिंग ब्रेस नहीं मिल जाता. जब आपको क्लोजिंग ब्रेस मिला है, चेक एट दिस पॉइंट, आपको यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस मिला है, आपको तब तक सारी चीजें पॉप आउट करनी है जब तक आपको ओपनिंग ब्रेस नहीं मिल जाता. सो दैट्स व्हाई आई हैव टू पॉप आउट दीज टू एलिमेंट्स बट वन बाय वन. सो व्हेन यू आर पॉपिंग आउट दिस वन बाय वन, आपको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पॉप करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन,
और उसके बाद आपको पॉप करना पड़ेगा प्लस। ये सब आपको पॉप करना पड़ता है, आपका स्टैक कंप्लीटली एम्प्टी होता है। दैट मीन्स आपके पास सिर्फ एक ओपनिंग ब्रेस रह जाता है, बाकी कुछ नहीं। ओके, दिस नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ, दैट व्हेनेवर यू गेट अ क्लोजिंग ब्रेस, उस क्लोजिंग और ओपनिंग ब्रेस के अंदर जितने एलिमेंट्स है वो सारे आपको पॉप आउट करने पड़ेंगे एंड पुट इट इन द एक्सप्रेशन। प्लीज नोट एवरीवन। ओके, then उसके बाद you are getting minus sign, so minus is an operand, oh sorry, operator, so you put it into the stack. Then you are getting it as f, so f you can directly mention here, right? Then you are getting division sign, so division sign अगर आप डाल रहे हो, division is higher precedence as compared to minus, so division can come over minus into the stack, that's not an issue. Next is g goes into the expression. Once you go for the last value, that is closing brace. क्लोजिंग ब्रेस जब भी आप डालते हो, व्हाट यू हैव टू डू, जितने एलिमेंट्स बाकी है आपके स्टैक के अंदर, वो सारे एलिमेंट्स आपको पॉप आउट करने पड़ेंगे। सो क्या क्या एलिमेंट्स बाकी है, डिवीजन एंड माइनस, तो आपको इसी ऑर्डर में पॉप करना पड़ेगा। यू कैन नॉट डू माइनस एंड डिवीजन, पहले हायर प्रेसिडेंस को पॉप करो फिर लो प्रेसिडेंस को पॉप करो। सो यू हैव डिवीजन एंड माइनस, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ओवर हियर. Is this understood to all of you? Kindly let me know into the chat so that we can move ahead. Okay, fine. So moving ahead, now if we wish to do the same thing using a different variety, okay, अगर हमको एक दूसरा variety से करना है ये problem, so we will just check that everyone, कैसे करना है. I'll take down the question first. एक मिनट. It's sorry. It's a plus b exponential c into d divided by e minus f divided by g, right? This is the problem statement. Now we start from left to right. Now when we go from left to right, first preference will be given to the brackets. तो इसके लिए हमको postfix करना है. So you are going to say a plus b this de slash. I am keeping the brackets as of now students. अभी मैं फिलहाल रख रही हूँ, later on मैं ये delete कर दूंगी. Okay? So ये इतना किया. इसके बाद what is the next thing which you are having? You have this exponential now, right? So आप कैसे वर्क करोगे? एक्सपोनेंशियल किसके ऊपर वर्क हो रहा है? बी एंड सी के ऊपर. सो यू आर गोइंग टू से ए प्लस बी सी एक्सपोनेंशियल इनटू डीई
minus f divided by g. Next क्या है? Next you are going to have multiplication as well as division. ये दोनों जो है they are of the same preference. So अगर ये same preference के है, so आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, बट इट शुड बी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, सो लेफ्ट टू राइट जब हम लोग कर रहे हैं, सो हाउ वी आर गोइंग टू डू a प्लस बी सी एक्सपोनेंशियल डीई स्लैश एंड मल्टीप्लीकेशन माइनस एफ डिवाइडेड बाई जी. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज, अभी मैं नेक्स्ट प्रेफरेंसेस किसको दूंगी? अभी मेरे पास क्या क्या है? प्लस है, माइनस है एंड डिवीजन. डिवीजन इज एनीवेज हैविंग हायर प्रेफरेंस, तो उसको पहले सॉल्व करते. सो ए प्लस बी सी एक्सपोनेंशियल डीई डिवीजन मल्टीप्लीकेशन माइनस एफ जी बार. राइट, नाउ द नेक्स्ट इज this part, a plus this entire thing, right? Now you have plus and minus both. So plus and minus both are having same preference. So as a result of that, you can just execute one from the left hand side, right? आप plus and minus दोनों साथ में नहीं कर सकते, एक किसी को आप execute कर सकते हो. So that we will do. तो हम लोग क्या करेंगे? We will execute this a and this entire thing with plus first. So we will say ABC exponential DE division multiplication plus, right? And this is going to be minus FG slash, right? Final answer अभी आपके पास सिर्फ एक ही है minus. So what you are going to do? ABC exponential DE division multiplication plus FG division minus. Please note this is exactly the same answer which you have got while doing it on a stack. Exactly same answer आपको मिला है. So this is again a shortcut way by which you can try and check whether the answer which you have got is correct or no. If this is understood, kindly let me know so that I can move ahead. Okay, moving ahead everyone. Next problem. Find the position of the element 29 using binary search method in a given array. Show each step. Now students, kindly note, this is a 4 marks question. You have to show each and every step specifically to get complete marks. Okay. So now check, in a binary search problem, the initial problem starts with that the array has to be completely sorted. array आपका completely sorted होना चाहिए. ओके, नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे आपका array sorted नहीं है, तो क्वेश्चन में दिया है array आपका sorted नहीं है. सो अगर वो sorted नहीं है, आपको step 1 होगा उसको sort करना. So if you check the marks over here, 1 mark for taking sorted input and 1 mark for every iteration. ओके, सो अगर आप देखो, आप इसको पहले sort करोगे. Okay, so this is going to give you 1 complete mark. Then binary search algorithm, how does it start? Binary search algorithm always tries to calculate the middle element. If it is equal to the middle element, it's okay. Otherwise we take a call on where we need to move. इस तरह ये काम होता है, right? So सबसे पहले आपका beginning pointer जाएगा first value पे, that is 0, and आपका end pointer जाएगा last value पे, which is let's say 7. Okay, so ये आपका स्टेटस है. अब हम लोग मिड पॉइंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. मिड पॉइंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 0 plus 7 divided by 2. So this is going to give you somewhere around 3.5. अब 3.5 को आप
अगर 4 लेना चाहो आप ले सकते हो, नहीं तो आप उसको 3 लोगे तो भी चलेगा। ओके, सो 3 और 4 कोई भी एक वैल्यू आप यहाँ पे ले सकते हो, राइट। सो वी आर टेकिंग फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये 3 कंसिडर कर रहा है। सो आप अभी 3 पे चेक करो वैल्यू क्या है आपका। अब आप अगर 3 पे जाएंगे तो आपका वैल्यू है 11। सो अगर आपका वैल्यू है 11 विच इज नॉट इक्वल टू 29, सो इसका मतलब मुझे मेरा इटरेशन कंटिन्यू करना पड़ेगा, मुझे आगे और जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन आगे आगे अगर मैं जाने का कोशिश करती हूं तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना है, दैट आई नीड टू फाइंड आउट। ओके, नाउ सिंस अपना एरे इज अ सॉर्टेड एरे, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट क्या होता है कि आपका जो 29 है वो हमेशा राइट साइड ऑफ 11 पे ही आएगा, 11 के आगे ही आएगा वो। ओके, पीछे आने का कोई चांसेस नहीं है क्योंकि योर एरे इज सॉर्टेड। सो आपको राइट साइड डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप लोग राइट साइड डायरेक्शन में यहाँ पे मूव करते हैं, राइट। सो व्हेन यू आर मूविंग, आप कैसे स्टार्ट करोगे, बिगिनिंग इज गोइंग टू बी मिड पॉइंट प्लस 1। क्यों, क्योंकि आप ये एलिमेंट देख चुके, ये आपका इंटरेस्टिंग एलिमेंट नहीं है, तो मिड पॉइंट प्लस 1 विल बी योर बिगिनिंग पोजिशन, जबकि एंडिंग पोजिशन यू विल नॉट चेंज। ओके, एंडिंग वैसे का वैसा रह जाएगा। सो यू विल से beginning position is 4 and this is your 7. So 4 plus 7 divided by 2, 11 by 2 should give you 5.5, but we are taking 5 value. अभी हम लोग 5 वैल्यू पे जाके चेक करते हैं व्हाट इज योर वैल्यू। आपका वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ पे 21, विच इज नॉट इक्वल टू 29, बरोबर। सो इसके लिए हमको फिर से, एंड इट इज ग्रेटर देन और 21 इज लेस देन 29, सो इसके लिए आपको मूव कहाँ करना पड़ेगा, फिर से राइट डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। So again you are going to move to the right direction. So आपका आ जाएगा beginning will be mid plus 1. What was your mid? 5. So अभी mid plus 1 is going to be 6. So 6 and ending is 7. So what is 6 plus 7 divided by 2? It will give you somewhere around 6.5. So we are going to consider 6. So 6 अगर मुझे consider होता है तो a of 6 का element check करो. Yes, it is 29. Your search ends here. आपको जो element चाहिए था वो element आपको यहाँ पे मिल गया। ओके, सो दिस इज हाउ वी हैव डन 3 इटरेशंस। इसके लिए 3 मार्क्स है और 1 मार्क है आपका एरे कंप्लीटली सॉर्ट करने के लिए। सो दिस कंप्लीट्स योर 4 मार्क्स कंप्लीटली। ये समझ में आया सबको? प्लीज लेट मी नो इन दी चैट। ओके, ठीक है, आई मूव अहेड। जस्ट अ मिनट। Okay, now next is give the adjacency list and adjacency matrix of the given graph. Okay, so यहाँ पे next question is adjacency list and adjacency matrix. So this is your given graph. Okay, यहाँ का आपको adjacency list बनाना है। adjacency list कैसे होता है? For every node आपको एक लिस्ट, लिंक लिस्ट टाइप बनाना पड़ता है। A का डायरेक्ट कनेक्शन किसके साथ है? B. So that's why you are just making a connection of A to B and leaving it. B के कितने नोड्स है? आउटगोइंग नोड्स, जस्ट चेक द आउटगोइंग नोड्स बेसिकली। ओके, सो B कितने चीजों के साथ लिंक्ड है? B इज लिंक टू E, B इज लिंक टू D. सो इसके लिए B का पहला आउटगोइंग लिंक D के साथ होता है, फिर B का एक आउटगोइंग लिंक E के साथ होता है, एंड लास्ट नोड को वी विल ऑलवेज स्पेसिफाई एज नल। ओके, वैसा ही अगर आप C देखो तो C का आउटगोइंग लिंक्स चेक करो। 2 आउटगोइंग लिंक्स है आपके पास, A है एंड E है, दैट यू हैव पुट। D इफ यू चेक, D का आउटगोइंग लिंक्स क्या क्या है? एक B क्यों जा रहा है आपका आउटगोइंग, एक ही आउटगोइंग लिंक है B, सो यू आर पुटिंग इट एज B, एंड E इज इफ यू आर मेकिंग इट E to D, right? That is your adjacency list. Adjacency, this is your adjacency list representation, same way, right? So if you check A,
सो ए का एडजेसेंट नोड इज बी, बी का देखोगे तो एडजेसेंट नोड्स आर डी ई, सी का देखोगे तो ए ई, डी का बी एंड ई का डी. So that's how you have written the adjacency lists. Adjacency matrix अगर आप रिप्रेजेंट करते हो, so you are just going to find out what are the links. जैसे this is a directed graph, so if we have a link from A to B, we are going to make it 1. If there is a link from B to D, we are making it 1. If there is a link from B to E, we are making it 1. Else everywhere it is going to remain 0. This is what is a adjacency list and an adjacency matrix. Is it understood, everyone? Okay, moving ahead. Working of bubble sort. So what is a bubble sort algorithm? You already know, right? So first of all, you are going to explain the theory of bubble sort algorithm. Once you are explaining the theory of bubble sort algorithm, uske baad you are going to take an example. See, it's a 4 marks question. So 2 marks is for description, 2 marks is for example. So आपको एक example लेना पड़ेगा और वो example के साथ आपको completely bubble sort कैसे work होता है वो आपको explain करना पड़ेगा. Okay. So for example, you are taking 2, 19, 27, 3, 7, 5, 3, 1. What is the gist of bubble sort? At the end of every pass, okay, the highest number will always move to the राइट मोस्ट एंड. ओके, सो ये आपको बार बार ट्रैक रखना पड़ेगा. सो जैसे फर्स्ट ट्रैक में आपका 31 मूव हो जाएगा, नेक्स्ट में 27 फिक्स हो जाएगा, इस तरह से. सो फाइनली जितने एलिमेंट्स हैं, अभी आपकी कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7. सो 7 माइनस 1, 6 पासेस आपको डेफिनेटली लगेंगे. Okay, so number of elements you have minus 1 passes you are going to require to execute that program. So I will suggest कि हमेशा छोटा array ले लो. 4 एलिमेंट्स का array ले लो तो आपको 3 पास में वो एलिमेंट सॉर्ट हो जाएगा. ओके, आपने कम एलिमेंट्स वाला array लिया है इसलिए आपको कम मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं होता है. ओके, यू विल गेट गुड मार्क्स ओनली. द ओनली थिंग इज कि आप अगर बहुत ज्यादा बड़ा array ले लोगे तो आपको अननेसेसरीली उतने पासेस कंप्लीट करने पड़ते हैं, राइट? सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट. Construct a binary search tree for the following elements. So we are going to construct a binary tree for the elements. So binary tree construction करते समय how do we start always? Check. First element will always be the root. Next element, when I am inserting, if it is greater than the element, put it on the right side. If it is less than the element, put it on the left side, right? So 30. So 30 से 100 is bigger. So इसलिए 100 goes as the right child of 30. Then when I'm inserting the third element, that is 90, 90 is greater than 30. So it has to be on the right of 30, but it is less than 100. So it has gone on the left of 100. Next is 15, which is less than 30. So it comes on the left of 30. Next is 2, which is less than 15 also. So it's on the left of 15. Next is 25, which is less than 30. So it will come on the left of 30. But it is greater than 15, so that's why it comes on the right of 15. Okay, next element we insert is 36, which is higher than 30, so it comes on the right hand side, but it is lower than 100, so it will come on the left hand side of 100. It is lower than 90 also, so it comes on the lower left hand sides of 36, right? Next is 72, so it will come on the right hand side, no doubt. But 72 is less than 90, so it comes on the left hand side of 90, but it is greater than 36, so it comes on the right hand side of 36. Next is 78, that will come on the right hand side of 72. Last element which you have is 10, which is less than 30, so it comes on the left hand side, but it's greater than 2, so it comes on the right hand side of 2. Is this understood, everyone?
Shall we move ahead, everyone? Okay. So, next question. Write an algorithm to count number of nodes in a single linked list. तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक एल्गोरिदम लिखना है जहां पे कितने नोड्स है आपके लिंक लिस्ट में, ये आपको काउंट करना है. ओके, सो हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द एल्गोरिदम. आप सबसे पहले लिखोगे काउंट एज 0. काउंट करके एक वैल्यू वेरिएबल इनिशियलाइज करोगे जिसको 0 रखोगे. इनिशियलाइज अ नोड पॉइंटर करंट इज इक्वल टू हेड. सो आप यहाँ पे आप फर्स्ट एलिमेंट को, फर्स्ट नोड को हमेशा हेड करके डिक्लेयर करोगे. ओके, नाउ यहां से डू फॉलोइंग व्हाइल करंट इज नॉट इक्वल टू नल. नल कब होगा? व्हेन इट इज द लास्ट नोड. सबसे लास्ट नोड जब होता है वही आपका नल होता है, राइट? सो वो आपको, जब तक वो आपका नल नहीं आता तब तक आपको रिपीट करते रहना है ये प्रोसेस. ओके, सो व्हाट यू आर रिपीटिंग, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट. तो आप बार बार क्या करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे जाएंगे. आप नेक्स्ट नेक्स्ट नोड पे जाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, और आपका यहाँ पे काउंट है, ये काउंट प्लस प्लस होते रहेगा. तो जब तक आपका नल नहीं आता तब तक आपका काउंट बार बार प्लस होते रहेगा. एंड देन फाइनली यू आर गोइंग टू से रिटर्न काउंट. सो दिस इज गोइंग टू रिटर्न यू the current count of the number of variables which are number of nodes which are present in your linked list, right? Write a program in C to insert an element in a linear queue. Okay, so ये सिंपल प्रोग्राम है. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, दिस मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, इसको बोलते हैं मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, जहां पे आपको चॉइसेस दिए जाते हैं, वेदर यू वांट टू इंसर्ट, यू वांट टू डिलीट, यू वांट टू एग्जिट. ओके, सो आपने इंसर्ट एंड डिलीट का ऑप्शन ले लिया. ओके, सो यहाँ पे व्हाट ऑल थिंग्स यू आर डूइंग, यू आर आस्किंग द यूजर टू एंटर द चॉइस. ओके, अगर आप एंटर करने को बोल रहे हो चॉइस, यू आर पहले आप चेक कर रहे हो जब उसको इंसर्ट करना है. ओके, अगर यूजर को इंसर्ट करना है तो यूजर को इंसर्ट करने से पहले आपको पहले चेक करना पड़ेगा कि वेदर द क्यू इज फुल और नॉट. अगर आपका क्यू फुल है सो आप आगे जा ही नहीं सकते, राइट? यू कैन नॉट इंसर्ट एनीथिंग. सो दैट्स व्हाई वी चेक इफ रेयर इज इक्वल टू एक्स, दैट इज आपका जो लास्ट एलिमेंट है, इफ इट इज एट द रेयरेस्ट पोजीशन, सो यू आर गोइंग टू से कि आगे इंसर्ट करके कोई सेंस ही नहीं, मेरा क्यू भर चुका है. अदरवाइज आप क्या करोगे, you will ask the user to enter the number which you want to insert. और यूजर जो भी नंबर एंटर करेगा यू आर गोइंग टू एंटर इट एट द रेयर पोजीशन. सो हम करेंगे क्यू रेयर प्लस प्लस, राइट? सो यू आर गोइंग टू इंसर्ट द नंबर एट दैट लोकेशन. केस 2 इज इफ यू वांट टू डिलीट, राइट? सो इन केस अगर आपका फ्रंट इज इक्वल टू रेयर, अगर आपका फ्रंट और रेयर एक ही पोजीशन पे है तो आपका क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है. सो अगर आपका क्यू एम्प्टी है आप उसमें से कुछ नहीं निकाल सकते बाहर, राइट? सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप लिख दोगे डायरेक्टली क्यू इज एम्प्टी. एल्स हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट से लेके रेयर तक, ओके, आप लोग फाइंड आउट करोगे कौन सा एलिमेंट आपको यहाँ पे डिलीट करना है. ओके, सो यूजर विल बी एंटरिंग द पोजीशन एटलीस्ट दैट व्हाट यू वांट टू डिलीट, that from that position you are going to delete the element. Okay, and third case is in case if he is entering anything rather than 1 2 and 3, third is exit point. Okay, so if you are saying exit the program, so case number 3 आप 3 टाइप करोगे. in case अगर आपने 1 2 3 के अलावा कोई भी और नंबर एंटर किया, so it's going to display you that it's wrong choice, please tick the options. Is this understood to all of you? Kindly let me know in the chat.
Okay, moving ahead. Next is describe the circular linked list with a suitable diagram. Also state advantages of circular linked list over linked list. Okay, so यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे सबसे पहले दिस इज डिस्क्राइब. सो आपको डिस्क्रिप्शन के लिए 1 मार्क दिया जाएगा, सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए 1 मार्क डायग्राम के लिए दिया जाएगा, एंड फिर एडवांटेज ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट, आपको जो बाकी का एडवांटेजेस है वो एडवांटेजेस के लिए आपको लेट्स से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से 2 मार्क्स दे हैव गिवन फॉर डिस्क्रिप्शन, 1 mark for diagram and 1 mark for the advantage. Okay, so basically what is a circular linked list? It is just you have a linked list. Okay, so from this linked list आप क्या करोगे, जो आपका लास्ट में आपको जो लीनियर लिंक लिस्ट में नल आ रहा था, नल को आप कनेक्ट कर दोगे फर्स्ट लिंक लिस्ट के साथ, so that is going to make you a circular linked list. इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन you can give this is, if you can check, this is the प्रोटोटाइप जो हम डेवलप करते हैं फॉर अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, so that you can write down. Okay, then you can specify what are the advantages of a circular link list. Okay, so circular link list is better as compared to linear link list in cases when you want to use maximum amount of space. Okay, क्योंकि अगर आपने नॉर्मल स्पेसिंग यूज किया है तो कभी कभी प्रॉब्लम ये हो जाता है कि लिंक लिस्ट से कोई डेटा अगर आपका रिमूव भी हो जाता है, सो इन दैट केस हम आगे हमारा लिंक लिस्ट ऐसे दिखाएगा कि द डेटा इज द लिंक लिस्ट इज फुल बट एक्चुअली यू हैव स्पेस इन बिटवीन. सो वो ट्रैक रखने के लिए वी कैन गो फॉर अ सर्कुलर लिंक लिस्ट, एंड दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ सर्कुलर लिंक लिस्ट. सो यू कैन जस्ट मेंटेन, दिस इज कंप्लीटली थियोरी पार्ट, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू देम and you can write it. Okay, I'll move on to the next question. We'll discuss more on the algorithms and problems because otherwise we won't be able to complete this today, right? So at least this paper has to be completed today, so I'll move on to these things. So yeah, here write an algorithm to perform push and pop operations on the stack. So push and pop operations करने के लिए if you check everyone, okay, so push operation means you have to check first of all that the stack is not full, so इसलिए हम लोग चेक करते हैं stack overflow. Okay, so you're going to check a stack overflow operation and उसके बाद ही आप आपका push operation work करोगे. Okay, so आप क्या करते हो, increment the stack top, so you say stack top is equal to stack top plus 1. Okay, so एक एक करके आप एलिमेंट आप stack में डालते हो और उसका stack top increase करते जाते हो. In case of pop, what you do, you first check that the stack should not be empty. अगर आपका stack empty है तो फिर आप उसमें से कुछ pop ही नहीं कर सकते. So आप in that case you cannot use this push and pop operation. Okay, and otherwise what you do is you will always delete the topmost element. Okay, so जो भी आपका stack top है you are going to delete that topmost element and reduce your stack top by 1. Okay, so remember one thing students, in your examinations for fetching good marks in an algorithm, write it in a stepwise fashion. Okay, this way, because your model answers are also providing you stepwise fashion, so this will be expected in your examinations also. So I prefer you go for stepwise fashions only and you write down the algorithms in this way, right? Next is for the given binary tree, write the in order, pre-order and post-order traversals. So what is an in order traversal, pre-order and post-order? In order traversal के समय आपको एक चीज याद रखनी है, आप हमेशा लेफ्ट फिर वर्टेक्स फिर राइट इस तरह मूव करोगे. Pre-order traversal में you will always move to the vertex, then left, then right. Post-order traversal में you are always moving to the left, right and then vertex. Okay. So with that in mind, we will start with solution of this problem. Check. In order traversal आपको करना है, so you will go for left, vertex, right. So left is Q, then is vertex E, then you go to the right F. Okay, so अगर आप F पे जाते हो, check F का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है बट उसका एक राइट चाइल्ड है R, so आपको राइट चाइल्ड लिखना पड़ेगा. तो ये सब ट्री आपकी कंप्लीट हो गई. ये जैसे ही सब ट्री आपकी कंप्लीट हो गई, आप अभी ऊपर की तरफ जा रहे हो. ओके, सो लेफ्ट सब ट्री इज डन, यू विल गो टू D. You are moving to the vertex, that is D, and then to the right subtree, that is H. This entire left subtree is completed. Now you will go to the this, that is B. जब आप B के पास जाते हो तब the thing is कि आप B के इधर चले गए. Now the thing is कि you do not have a right subtree, so you may not come here. Okay,
Now your entire left subtree is finished. Now you will go to the vertex, that is A. उसके बाद start करो left subtree, sorry, right subtree, but right subtree में भी left subchild है. So that you need to check. So you will go to the leftmost child. So आप सबसे पहले इसका left child देखोगे, that is I. इसका खुद का कोई फिर से और लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, सो यू विल नॉट मूव देयर, यू विल मूव टू द राइट चाइल्ड. ओके, सो राइट चाइल्ड में यू हैव द फर्स्ट राइट चाइल्ड J, then you have the next right child K. Once you have these, then you move to the center, that is C, that is the vertex. Then you move to the right subchilds. तो यहाँ पे आपके पास right subchilds क्या क्या है? You have the L over here, and then you are going to have P. So this is completely your in-order traversal. नेक्स्ट व्हेन वी मूव टू दी प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, प्री ऑर्डर में क्या किया जाता है? सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स को टारगेट करते हैं, उसके बाद लेफ्ट, उसके बाद राइट. सो हमने पहले वर्टेक्स को टारगेट किया, दैट इज ए. उसके बाद हम लोग लेफ्ट सब चाइल्ड के पास जाएंगे, तो हम जाएंगे बी के पास. देन वी विल गो टू डी, देन वी आर स्लोली मूविंग टू ई. देन डज इट हैव अ राइट लेफ्ट सब चाइल्ड? यस. सो वी आर मूविंग टू क्यू. ओके, ये पूरा लेफ्ट ट्री कवर हो गया. फिर राइट ट्री के पास जाओ, यू विल मूव टू एफ, देन यू विल मूव टू आर. इसका राइट ट्री भी कवर हो गया, इसका राइट चाइल्ड बाकी है, सो गो टू एच. देन यू कम बैक, आपका ऑलरेडी ऊपर का नोड हो चुका है, सो यू विल गो टू द राइट सब ट्री, सो यू विल गो टू सी. ओके, इसका लेफ्ट सब ट्री देख लो आई. ओके, इसके पास और फर्दर कोई लेफ्ट सब ट्री नहीं है, सो यू विल गो टू द राइट सब ट्री, सो दैट इज जे एंड के. Then later on you will go to their right subtrees, that is L and P respectively. So this is how we complete our pre and in order traversals. Is this complete? Let me know in the chat, everyone.
Yeah. Moving on to post order traversal, everyone. Okay. So post order traversal is going to be from your left hand side, then your right hand side, and then your vertex. So one thing you need to remember, vertex should be at the end. Okay. Vertex आपका end पे आ जाएगा तो आपका ये problem solve हो जाएगा. Okay. So you start from your लेफ्ट हैंड. सो यू आर गोइंग फॉर क्यू. क्यू. उसके बाद आप जाओगे राइट हैंड पे, दैट इज आर. उसके बाद जाओ उसके लेफ्ट हैंड पे, दैट इज एफ. ओके. उसके बाद जाओ उसके वर्टेक्स पे, दैट इज ई. राइट. उसके बाद दिस इज योर लेफ्ट साइड, ये आपका कवर हो गया. मूव टू द राइट साइड डायरेक्टली, डोंट गो टू द वर्टेक्स, मूव टू द राइट साइड विच इज एच. फिर मूव टू द वर्टेक्स, दैट इज डी. ओके. उसके बाद यू गो टू इसका लेफ्ट चाइल्ड, ये लेफ्ट हो गया, राइट चाइल्ड है ही नहीं, सो मूव टू दी वर्टेक्स, दैट इज बी. ओके. उसके बाद डायरेक्टली मूव करो राइट पे, डोंट गो टू द वर्टेक्स, मूव टू द राइट. ओके. सो जब आप यहां पे जा रहे हो, इसके लेफ्ट पे अभी ट्रैक करना चालू करो. सो पहले यहां पे इसके लेफ्ट चाइल्ड में कुछ है नहीं है, सो आप इसके राइट चाइल्ड पे जाओ, के पे जाओ, फिर जे पे जाओ, उसके बाद उसका वर्टेक्स पे जाओ, दैट इज आई. सेम वे ये वर्टेक्स छोड़ दो, गो टू द राइट चाइल्ड, गो टू पी, गो टू एल एंड देन गो टू सी. ओके. व्हेन यू गेट दीज कंप्लीट, आपका लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट हुआ, राइट चाइल्ड कंप्लीट हुआ, देन यू कैन कम बैक टू योर वर्टेक्स, दैट इज ए. सो दिस इज व्हाट इज योर प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल. ओके. If a repetition is needed for this, I'll do it tomorrow during the session, because if I start again repeating this now, it's going to be difficult for completion. Right? So I'll repeat this topic again with another example, in order, pre-order, post-order tomorrow during the online session. Okay? Write an algorithm to insert an element at the beginning and end of the linked list. Right? So algorithm to insert the element at the beginning. So how do you write? Again, a stepwise pattern. Okay. So you're going to create a node pointer, that is, I'm naming the node as temp. Okay. Then you're allocating memory for that node. Next, temp info is equal to data. Temp next is equal to start. ये मैं क्यों कर रही हूं? Because ये जो आपका नोड बनने वाला है, ये जो आपका नोड बनने वाला है, आई एम सेइंग दिस इज योर डेटा एंड दिस इज गोइंग टू बी नेक्स्ट. ओके. इसके दो पार्ट्स में, आपको नोड के दो पार्ट्स में मैं आपको डिवाइड करके रख रही हूं पहले ही. नेक्स्ट इज स्टार्ट इज इक्वल टू टेम्प. सो आई एम सेइंग दैट फर्स्ट वैल्यू इटसेल्फ शुड बी स्टार्ट. So this value itself should be start, because I am inserting an element at the beginning of the linked list. So ये यहां से ही मैं start करने बोल रही हूं. Okay. And then stop, that is end of insertion of the first element into the beginning. Next is insertion at the end. So all the other methodologies are going to be remaining same. Only thing is ki if your linked list is empty, you are going to say it's sorry, if your linked list is completely full, आप बोल दोगे कि इंसर्शन पॉसिबल ही नहीं. राइट. सो दैट्स व्हाई वी से डिस्प्ले ओवरफ्लो कंडीशन. ओके. सेम वे आप दो चीजें डालोगे, आप पहले लिखोगे इन्फो एंड आप उसका नेक्स्ट वैल्यू डालोगे, एंड आप अप टू द टाइम क्यू नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल. व्हाट इज दिस? नाउ यू हैव अ लिंक लिस्ट ओवर हियर, इस तरह से. दिस इज योर लिंक लिस्ट. नाउ up to the time you are not going to the end, क्योंकि आपका जो नया नोड है, you are going to insert it at the end. So ये यहां पे insert करना है आपको. So up to the time you are not moving to the end, आपको ये continue करना है process. So that's why we say while q dot next not equal to null, we will say q is equal to q next. हम next value पे चले जाएंगे q के, and then we are going to say q next is equal to temp. So जो नया आपने node बनाया है, that we are going to put as the last node of your linked list, and then we are going to stop. Please let me know whether this concept is clear or no, everyone, before we move ahead.
Okay, fine. Now moving on to the next problem, that is selection sort. So you have to run selection sort on this given entire thing. It's a 6 marks question. So 3 marks you will need to describe what is a selection sort. Okay. And then 3 marks will be for execution of this problem state. Okay. So selection sort किस तरह solve किया जाता है everyone. Okay. So if you check selection sort में what exactly happens over here is you will be selecting the okay least element from this entire array and put it at the beginning. Okay, so एक एक करके elements आप compare करते हो and सबसे least जो element होता है ना वो आपका सबसे पहले आके यहाँ पे खड़ा होता है. Okay, otherwise all the elements are going to remain as it is. So in the first iteration check we have captured the first element, that is 5, and we have put it over here. In the second iteration we are taking the next value, that is 15. Okay, so next value is 15 and we are putting it after that. Third iteration, the next level, that is 25. Fourth iteration is 35 and this finishes your in 4 iterations. So आपके number of values कितने थे? 5. 5 values थे, आपको उस पे selection sort run करना है and within 4 passes you are going to get the correct answer. Okay, so this is how we run the selection sort example. You have to just remember one thing, in selection sort, bubble sort में क्या होता है? The highest number always move to the rightmost end. Selection sort में क्या होता है? The smallest number will always move to the left hand side. Okay, that you need to just remember, right? Next, just a minute. Okay, they have shown another example with this minus 55. Now, if you check the same example and I'm having minus 55 instead of 55. So now minus 55 is the least number. तो इसलिए मैं सबसे पहले minus 55 डालूंगी. Okay, I will put minus 55 here. और वो सबसे पहला sort होगा. उसके बाद किस तरह sort होगा? Then you will get 5, then you will get 15, then you will get 25, then you will get 35. So approximately मुझे फिर से 4 पास लगेंगे, चेक 4 पास लगेंगे और अब मेरा array completely sort हो जाएगा, right? Next is define the term recursion. What is exactly recursion? Write a program in C to display factorial of a number using recursion. So this is a 6 marks question. So 2 marks will be required to explain what is recursion. Exactly recursion क्या है ये बताने के लिए 2 mark मिलेगा आपको. And then one program to display. So they are saying a factorial program. So factorial program कैसे लिखा गया है? Please ध्यान दीजिए everyone. We have written the factorial program in this way: int fact int n. So this is the what do I say? Argument which we are passing for the number for whom I want to calculate the factorial. Next I say the factorial is, we are going to call the function fact n. Okay. So the function is in this way written: if n is equal to 1, यानी मैंने अगर यूजर को बोला है n is equal to 1, तो वो रिटर्न 1 कर देगा. ओके, वो रिटर्न कर देगा आपको वो वैल्यू. एल्स, क्योंकि फैक्टोरियल ऑफ 1 is 1, एल्स हम क्या करेंगे? n into factorial n plus 1. Now let's see how this is working. Now for example हमने n लिया है, n is equal to 5. Okay, so n into fact of n minus 1. So इसका मीनिंग क्या है? 5 into fact of 4. So ये रिकर्शन में जाएगा. रिकर्शन में जब जा रहा है fact of 4, वो क्या बोलेगा? n into n minus 1. So that is 4 into fact of 3. ये 5 भी यहां से कैरी फॉरवर्ड होगा. So 5 into 4 into fact of 3. ये ऑटोमेटिकली क्या होगा? 5 into 4 into 3 into fact of 2. So this is going to again be 5 into 4 into 3 into 2 into fact of 1. Problem statement क्या बोलता है? If n is equal to 1, you are going to return 1. So ये क्या हो जाएगा? 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So this is going to give you 120, which is factorial of 5. Okay. So this is how the process takes place in recursion. Recursion is a function calling itself. And why this thing is there? Because use of recursion is with the help of stacks. आपको stacks लगता है recursion run करते समय. So you need to keep a track of that. Okay.
So please note that, everyone. Is this understood? Okay. Moving ahead. Next is describe the procedure to delete an element from the single linked list using a diagram. Okay. So delete जो element होता है, that delete an element can be at three different positions. Okay. It can be at the beginning, it can be at the middle, it can be at the end. So तीनों options आपको देखने पड़ते हैं यहाँ पे. And this is a 6 marks question. So the thing is कि आपको तीनों के लिए specifically बताना पड़ेगा. Okay. So the thing is कि let's say this example. I want to delete an element from the beginning. Okay. So create a temporary node temp. Okay. So you are going to create a temporary node temp. And what you are going to do, you are going to link this start with this node 2. आपको अगर ये डिलीट करना है तो आप क्या करेंगे, ये आपका स्टार्ट है, ये स्टार्ट को आप डायरेक्टली नोड 2 के साथ लिंक कर देंगे. ओके. ऑटोमेटिकली ये आपका फ्री हो जाएगा. इफ यू चेक फ्रॉम हियर, यू आर सेइंग फ्री टेम्प. असाइन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड टू टेम्प पॉइंटर. सो जो भी फर्स्ट नोड है, यू आर गोइंग टू असाइन इट टू द टेम्प पॉइंटर एंड स्टोर द एड्रेस ऑफ सेकेंड नोड, ओके, इन द हेडर ऑफ पॉइंटर स्टार्ट. सो स्टार्ट का जो नेक्स्ट वैल्यू है, दैट विल बी पॉइंटिंग टू नोड नंबर 2 एंड इसको आप फ्री कर दोगे. This is the algorithm when you want to delete anything from the beginning of the node. Now, node from in between position. Now, अगर मुझे in between position से करना है, so you know what has to be done. Check node 2 को node 4 से लिंक कर दो. अगर आप node 2 को node 4 से, that is node 2 next is equal to node 4. अगर आप इस तरह कनेक्शन कर पाए, ये अपने आप फ्री हो जाएगा, right? So what you are doing? Here, create a temporary node temp and queue. You are creating two temporary nodes now. One will be for the element which is before the node you want to delete, that is node 2. मुझे node 3 delete करना है. So node 3 के पहले वाला जो node है, that I am going to consider first. Second will be the node जिसको मुझे delete करना है, that is queue. Okay. Assign address of first node to temp variable. So this I am going to assign to temp variable. Traverse the list up to the previous node. Okay, so you will traverse it up to the previous node to be deleted. यहां तक हो गए हम लोग. Mark the node to be deleted as q. इसको हमने q मार्क किया. Store the address from node q in the address field of temp node. Temp next is equal to q next. तो एक चेक करो, q का next क्या था, ये. So what you will do, temp next is equal to q next. ये दोनों को लिंक कर दोगे आप. And then you are going to say free queue. तो ये बीच में से अपने आप फ्री हो जाएगा. So this is the algorithm. Delete a node from the end. So when you are saying delete a node from the end, यहाँ पे क्या हो रहा है? Check. You have to just make two references. You have to keep a temp. Temp will be present at a node which is before the node which has to be deleted, and q will be the node which needs to be deleted. Okay. So temp का next जो है, that is temp का next, you are just going to directly set to null. Temp का next अगर आपने null कर दिया तो ये q अपने आप delete हो जाएगा, right? So if you check, create temporary node temp q, assign the address of first node to the temporary pointer. Okay. Traverse the list up to the second last node. आप यहां तक तो traverse करोगे second last node. Mark the last node address as q. ये आप q address करोगे. Store the null value in the address field of the second last node. So इसका जो address field है वहां पे आप null डाल दोगे and इसको आप free कर दोगे. So this is how we delete a node from the end. Is this part completely understood, everyone? Please let me know into the chat.
Okay, important questions. Is this completely understood, everyone? Okay, okay. So, important questions from this question paper. Fine, we'll start with that now. Okay, first of all, differentiate between stack and queue. Please mark it at your end, everyone. Differentiate between stack and queue. Define the terms linear data structure and non-linear data structures. Infix to prefix. Remember, your statement can be changed. Okay, your problem statement can be changed, but this is important. Infix to prefix. Okay. Linear search. Then difference between general tree and binary tree. C program for deletion of an element from an array. Infix to prefix, infix to postfix, dono you have to remember. Bubble sort. Binary search tree. Circular linked list. Pre-order, in-order, post-order traversals. And delete an element from the single linked list using a diagram. Now we have come to the end of completion of this paper. We are also come to the end of the live session. Before we end up, any doubts from your side? We have one more session tomorrow for 1.5 hours. Any doubts from your side? Please let me know. Please put it in the chat. Any doubts from your side? Please let me know. Important programs. Infix to prefix, I have already explained 3 times. 3 times I have explained infix to prefix. Okay, you can please ask your colleagues. Or else in tomorrow's class, if time permits, we will again go for infix to prefix.
But for today's class, I have already explained it 3 times at 3 different times. Okay. Important programs, yes, okay. We'll discuss infix to prefix in tomorrow's class. Important program, students, please note, even if it is not in your question paper, I'm putting it in the chat for you people. You can make a note of that. Implement stacks using C. Implement queues using C. Algorithms for linked lists, insertions and deletions, prefix, postfix, infix, not prefix, postfix, I'm extremely sorry. Pre-order, in-order, post-order in C, recursion in C, arrays, insertion, deletion in C, and sorting algorithms. Sorting algorithms, you can say bubble sort, insertion sort, at least to be prepared, and searching में linear and binary search. Anything else, students? Okay, fine. Then if there are no further questions, we will wind up. Okay. Thank you all. And we meet tomorrow at 6:30. Right? We'll solve one more question paper and few more doubts if you people have. Right? All the best.